तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। तो इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है रिस्पायरेशन। तो इसमें क्या होता है मैकेनिज्म में एक रिस्पायरेशन इन्वॉल्व टू स्टेजेस, इसमें टू स्टेजेस होते हैं, इन्वॉल्व होता है एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब ब्रीथ इन, सांस लेना, इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन मतलब ब्रीथ आउट, सांस को छोड़ना। तो ये दोनों मैकेनिज्म काम करते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ने को मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि क्या, पहले हम इंस्पायरेशन की बात करेंगे, ब्रीथ इन की। ब्रीथ इन में क्या होता है, तो ये 3D डायग्राम इसमें हम देख सकते हैं कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन कैसे हो रहा है इसमें। तो ये हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। तो इंस्पायरेशन जिसमें ब्रीथ इन करते हैं, अपने जो हम सांस लेते हैं, तो वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि हम खुद करते हैं। ठीक, एक्टिव प्रोसेस जो हम खुद करते हैं। तो इट इज प्रोड्यूस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग मसल्स। तो इसमें कुछ मसल जो होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हम सांस लेते हैं, ये एक्टिव प्रोसेस जिसे हमें खुद करना पड़ता है। और एक्सपायरेशन ब्रीद आउट, सांस को छोड़ना, वो पैसिव प्रोसेस है जिसमें हमें उसमें कोई भी सेल्फ एनर्जी यूज नहीं करना पड़ता है। और इंस्पायरेशन में हमें अपनी एनर्जी यूज करके सांस को लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि डायफ्राम। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये डायफ्राम होता है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा रोल है इसका। तो डायफ्राम क्या करता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच इनलार्ज द चेस्ट कैविटी वर्टिकली फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। तो ये क्या करता है, इनलार्जमेंट करता है, इसको बढ़ाता है चेस्ट कैविटी को। ये देखिए इसे बढ़ रहा है, फिर ये घट रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, और ये फिर घटेगा। तो ये डायफ्राम हमारी जो मसल हो गई, ठीक। तो ये हेल्प करती है इंस्पायरेशन में, ठीक। फिर नेक्स्ट है इंटरकोस्टल मसल विच कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस एलिवेशन ऑफ रिब्स और स्टर्नम। तो ये जो हमारी रिब्स देख रहे हैं वो स्टर्नम, ये एलिवेशन ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे आ रही है। तो ये ऊपर की तरफ जो जाती है तो इसमें हमारी इंटरकोस्टल मसल वर्क करती है। तो ये इसका काम क्या, दिस इनलार्जमेंट चेस्ट कैविटी इन ऑल द अदर 4 साइड्स। ये साइड से हमें चारों साइड से इसका एलिवेशन करती है। तो ये इंटरकोस्टल मसल इसमें वर्क करती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट द लंग्स एक्सपेंड एट दिस स्टेज एंड फिल दिस इन क्रेस्ट स्पेस। नाउ द प्रेशर इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो होता है उसके प्रेशर से लेस होता है। सो एयर फ्लोज इनटू द लंग्स, ठीक। तो जब हमारे बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम होगा, तो बाहर की हवा अंदर आएगी। और फिर हमारा जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा, तो ये अंदर से हवा बाहर की तरफ जाएगी, ठीक। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काम करता है। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये इंस्पायरेशन होता है। फिर एक्सपायरेशन में क्या होता है, इट इज़ दी पैसिव प्रोसेस। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें जो अपने आप होता है, इसमें पता नहीं चलता है कि हमने कब ऑक्सीजन छोड़ दिया। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। तो इसमें क्या होती है, हमारी जो डायफ्राम है ये रिलैक्स होती है, ठीक। जैसे अभी रिलैक्स होगी और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगी, ठीक। तो ये पैसिव प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं लगेगी और इसमें एक्सपायरेशन होगा, हवा बाहर निकलेगी। दिस प्रोसीड्स रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। इसमें हमारा चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस होता है रिलैक्सेशन में या ब्रीथ आउट में या एक्सपायरेशन में। सो द प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीज विच फोर्स एयर आउट। इसमें क्या होगा, लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, ये रिलैक्स होने में अभी लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल आएगी। अभी लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। फिर लंग्स का प्रेशर कम हो गया अभी, और ये लंग्स का प्रेशर अब बढ़ गया ब्रीथ आउट में। ब्रीथ, ठीक, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ठीक। सो दी प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीज विच फोर्सेस एयर आउट। द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन इज 16 to 18 पर मिनट। तो रिस्पायरेशन जो हमारा रेट होता है वो 16 से 18 पर मिनट होता है इन एडल्ट में, और चिल्ड्रन में ये हायर होता है। तो हम इंटरकोस्टल मसल की बात किए थे, तो ये हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये हमारी
इंटरनल, ये यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, ठीक, ये इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, ठीक। तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिसकी हम बात किए थे, ठीक। इंस्पायरेशन में हेल्प करती है इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल और एक्सटर्नल। Pulmonary ven The respiratory system is made up of organs that help us breathe. Respiration is the term used to describe the exchange of oxygen from the environment for carbon dioxide from the body's cells. The process of breathing air into the lungs is called inhalation, and the process of breathing it out is called exhalation. The respiratory system consists of all the organs involved in breathing. These organs all have their own unique functions that enable us to breathe as we do on average 23,000 times a day. The respiratory system includes the nose and nasal cavity, which perform a number of important functions, such as providing us with a sense of smell, warming and moistening the air we breathe in, filtering out irritants such as dust, and assisting us in the development of sound. The throat, also known as the pharynx, is a tube that carries air from the nasal cavity through the voice box, otherwise known as the larynx, down into the windpipe or trachea. The windpipe then splits into two breathing tubes, which carry the air into the lungs. These breathing tubes are called the bronchi, which extend into the bronchioli. The breathing tubes branch out many times throughout the lungs, until they eventually form tiny thin-walled air sacs or alveoli. The respiratory system does two very important things. It brings oxygen into our body, which we need for our cells to live and function properly. And secondly, it allows us to exhale carbon dioxide from our body. Carbon dioxide is the waste gas that is produced as a part of the body's energy-making process. As you watch the inhalation through the nose, throat, voice box, and into the breathing tubes, you will notice the lungs inflating. As we breathe in, muscles are working to inflate the lungs. The diaphragm, a large sheet of muscle which stretches across our chest under the rib cage, does most of the work during inhalation, causing the chest to expand as the lungs fill with air. The air travels down to the end of the breathing tubes where it enters the tiny air sacs. The tiny air sacs are filled with oxygen from the air travelling down from the breathing tubes. Covering each tiny air sac is a whole network of tiny blood vessels called capillaries. Within the air sacs, the oxygen enters the bloodstream through a process called gas exchange. The tiny air sacs have extremely thin walls with a large surface area lined with fluid to enable gases to dissolve. The oxygen particles from the inhaled air pass through the walls of the tiny air sacs and surrounding capillaries and into the red blood cells inside. The oxygen particles are then carried in the blood by structures called arteries. The arteries carry oxygenated blood around the body to all your organs and tissues. This process is essential for our well-being. As the oxygen particles are diffused through the walls of the tiny air sacs into the bloodstream, carbon dioxide, a waste product of the body, is travelling in the opposite direction. The deoxygenated blood is carried in veins from the organs and tissues back to the lungs. Carbon dioxide is diffused from the blood through the capillaries
and into the air within the tiny air sacs. Now that the air in the tiny air sac is saturated with carbon dioxide, the exhalation can now occur. Watch as the diaphragm relaxes and air is forced out of the lungs. The air travels back up the breathing tubes and is expired into the atmosphere. The lungs are a lot like balloons in that they require energy to expand, but no energy is needed to get air out. This makes exhaling an automatic response after inhalation. The respiratory system provides protection against foreign particles to prevent them entering the sensitive airways and causing disruptions to the gas exchange process. There are a number of protective mechanisms which the respiratory system has developed to safeguard itself. The nose filters the air we breathe in trapping dusts and other foreign particles. Mouth breathers will not have this filtering system, causing the lungs to be more exposed to foreign particles. If the dust does happen to get past the nose, the airways are lined with a sticky mucus which catches the foreign particles. Tiny hair-like structures line the airways to help move the mucus. The cough, which is a reaction to irritated airways, removes the sticky mucus from the airways. Mouth breathing has a number of impacts besides bypassing the filter system of the nasal cavity. Air inhaled through the mouth doesn't have the chance to get humidified in the nasal cavity, exposing your breathing tubes to harsh, dry and uncleansed air. Mouth breathing is also related to increased risk of infection, anxiety, stress, sleeping problems, and reduced immunity to infective bacteria or viruses. Breathing through your mouth can impact the body on a cellular level through oxygen and carbon dioxide deficiencies. Not being able to breathe through your nose can be caused by a number of different factors. If you are experiencing difficulties in breathing through your nose, speak to your GP about what could be causing your mouth breathing. यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन सी मसल यूज होती है ब्रीदिंग में, ड्यूरिंग ब्रीदिंग में, एक्टिव ब्रीदिंग में। तो जैसे स्क्लेनी हो गई, इंटरकोस्टल मसल हो गई, स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड, ये फोर्सप्स ब्रीदिंग जिसमें हम थोड़ा फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल यूज होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गई, ठीक, ये फोर्सफुली ब्रीदिंग में यूज होती हैं। पेक्टोरलिस मेजर, इंटरकोस्टल मसल हो गई जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये हो गई। फिर हमारा डायफ्राम हो गया, तो इसमें हम देख सकते हैं ये डायफ्राम इंस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और लेटिमस डोर्साई आ गया जो बैक में होती है हमारी मसल। ठीक, लेटिमस डोर्साई मसल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर। ठीक, और इरेक्टर स्पाइन मसल्स, ये भी फोर्स्ड इंस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। लिवेटर कोस्टारम ब्रेविस, ये भी हमें फोर्स्ड इंस्पायरेशन में, सांस लेने में, ठीक है, हेल्प करती हैं। सार्टोरियस हो गई, क्वाड्रेटर्स लंबोरम हो गया। ठीक, तो ये मसल्स हैं। डायफ्राम मसल हो गई, तो पढ़ा है ये। फिर क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ये भी फोर्स्ड इंस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। ठीक, तो ये मैकेनिज्म कैसा है इसमें देख सकते हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक, डायरेक्शन मीडियल लेटरल, डायमेंशन ऑफ बकेट हैंडल एंड पंप हैंडल, दो तरह से ये काम करती हैं।
Ventilation, commonly referred to as breathing, is the process of air mechanism flowing breathing में क्या in होता and है, out of the lungs during breathe inspiration in और and breathe out। तो expiration. ये प्रोसेस चलता The कैसे है, air इसमें movements एक are governed by the प्रेशर काम principles करता है, of जो gas laws. एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग्स का Basically, प्रेशर काम करता air है। flows from एक higher गैस to लॉ पे lower डिपेंड करता है, pressure. जैसे Pressure कि within a एयर फ्लो cavity हायर टू increases लोअर, when its volume हायर से decreases लोअर and में vice लोअर की versa. तरफ एयर हमेशा Volume फ्लो of a given करता है, amount हाई of से gas लो की तरफ increases भागता है। with increased तो temperature. लंग्स का जब प्रेशर At हाई और rest, लो in होता है between तो ये breaths, ऑक्सीजन the इन pressure और आउट inside the होती है। lungs, or तो इसमें हम intrapulmonary देखेंगे pressure, equals the pressure outside of the body, or atmospheric pressure. When discussing respiratory pressures, this is generally referred to as a relative pressure of zero. This is because what matters is the difference between the two pressures, not their absolute values. Thus, a negative pressure is a pressure below atmospheric, while a positive pressure is above atmospheric. The lungs are covered in a double-layer membrane which forms a thin space surrounding the lungs called the pleural cavity. The pressure within the pleural cavity, or intrapleural pressure, is normally negative. This negative pressure acts like a suction to keep the lungs inflated. If this becomes zero, such as in the case of pneumothorax, when the chest wall is punctured and the pleural cavity has the same pressure as the outside air, the lung would collapse. Pulmonary ventilation is achieved by rhythmically changing the volume of the thoracic cavity. During inspiration, the diaphragm and the external intercostal muscles contract, expanding the thoracic cavity and the lungs. This increase in volume results in a decrease in pressure, causing outside air to flow in. Another factor that helps to inflate the lungs is the warming of the inhaled air. This effect is most notable on a cool day when the temperature outside is significantly lower. The inhaled air increases in volume as it warms up inside the body and inflates the lungs, further facilitating inhalation. While inspiration requires muscular contraction and hence energy expenditure, expiration during quiet breathing is a passive process. As the diaphragm returns to its original position and the muscles relax, thoracic and lung volumes decrease and pressures increase, pushing air out of the lungs. Quiet expiration relies therefore on the elasticity of the lungs and ribcage, their ability to spring back to the original dimensions. Conditions that reduce pulmonary elasticity, such as emphysema, can cause difficulty exhaling. Deep breathing requires more forceful contractions of the diaphragm, intercostal muscles, and involves additional muscles to produce larger changes in the thoracic volume. Deep expiration, unlike quiet expiration, is an active process. Another factor that affects ventilation is the resistance to airflow, which exists within the lung tissues and in the airways. Lung compliance refers to the ease with which the lungs expand. Healthy lungs normally have high compliance, low resistance, like a thin balloon, easy to inflate. Lung compliance is reduced when the lungs become stiff, in conditions that cause scarring of tissues or fibrosis. In this case, the lung turns into a thick balloon, harder to inflate. Diseases that narrow the airways, such as asthma, increase resistance, making it harder to breathe. The airways may also dilate or constrict in response to various factors. For example, parasympathetic stimulation and histamine typically narrow the bronchioles, increase resistance, and decrease airflow, while epinephrine, a hormone released during exercises, dilates bronchioles and thereby increases air. Gas exchange is the major purpose of the respiratory system. Inhaled air unloads oxygen and picks up carbon dioxide in blood picks up oxygen and unloads carbon dioxide. The oxygenated blood then travels to body's tissues, where the reverse process इसमें हम गैस एक्सचेंज की बात करेंगे। happens. तो गैस एक्सचेंजेस क्या होता है, इस वीडियो में हमने देखा है अभी। तो गैस एक्सचेंजेस में क्या होता है, दो स्टेज में होता है, एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड और एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। तो जो गैस एक्सचेंज होगा टिश्यू और ब्लड में होगा और एल्वोलाई और ब्लड जो कि लंग्स में होगा। तो एक्सचेंज बिटवीन दी हम एल्वोलाई और ब्लड की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एल्वोलाई और ब्लड में क्या होगा, ठीक, ये हमारा एल्वोलाई है, ये हमारा ब्लड है और ये टिश्यू और ब्लड है, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे
कि एक्सचेंज बिटवीन एल्वेओलाई इट इज कॉल्ड ए पल्मोनरी और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं, बाहर का, या पल्मोनरी लंग्स में, जो कि ये लंग्स में होता है एल्वेलाई, तो ये वहाँ पे होता है। तो ऑक्सीजन टेंशन इन द एल्वेलाई एयर इज हायर, तो इस ऑक्सीजन टेंशन हायर होता है, ठीक है, एयर हायर 100 mmHg, बट दी, और ऑक्सीजन टेंशन इन द एल्वेलाई एयर इज हायर, ठीक, तो 100 mmHg हो गया, बट ऑक्सीजन टेंशन ऑफ ब्लड इन द कैपिलरी इज लो, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होंगे इसमें इसका टेंशन लो होगा, ठीक, वो एल्वेलाई में हाई होता है, ठीक है, बट द ऑक्सीजन टेंशन ऑफ ब्लड इस कैपिलरी इज लो, तो यहाँ पे जो जैसे कि ऑक्सीजन का लेवल यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे लो है, ठीक, तो इसमें हम फिर क्या होगा, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ऑक्सीजन एल्वेलाई, ठीक, जो ऑक्सीजन एल्वेलाई की है वो इंटर्स इनटू द ब्लड, तो जो इसका है प्रेशर यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है एल्वेलाई में, तो एल्वेलाई से ये O2 इसमें आ जाएगा ब्लड वेसल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और एल्वेलाई में कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पे प्रेशर सिस्टम काम करता है, जैसे कि हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज में कम होता है, तो एल्वेलाई से कैपिलरी में ऑक्सीजन चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड में इससे प्रेशर ज़्यादा है कैपिलरीज में और एल्वेलाई में कम होता है, तो ये एल्वेलाई में चली जाती है और ये लंग्स के थ्रू ब्रीद आउट हो जाती है, और ये ब्रीद इन होने पे ही ऑक्सीजन में आ जाता है। फिर टिश्यू की बात करते हैं, ठीक, तो इसमें फिर आउट हो गया, फिर हम टिश्यू की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, जिसे हम इंटरनल रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन टेंशन ऑफ द प्योर ब्लड सप्लाई द टिश्यू इज हायर बट द ऑक्सीजन टेंशन इन टिश्यू इज लो, तो टिश्यू में लो होता है ऑक्सीजन लेवल और ब्लड वेसल्स में ज़्यादा है अभी, तो ज़्यादा क्या है, कम की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाता है और टिश्यू उसको यूज़ करता है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का या ज़्यादा होता है और वो मूव करके कैपिलरी में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे कम होता है, ठीक है, तो ये इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं ये, और इसको एक्सटर्नल, ठीक, तो ऐसे ही ये हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, ठीक, तो ये समझ में आया। एल्वेलाई जो कि लंग्स, ठीक, लंग्स में एल्वेलाई में ज़्यादा होगा, तो ये कैपिलरीज में कम होता है और ऑक्सीजन का प्रेशर, तो एल्वेलाई से कैपिलरीज में आ जाता है, फिर ये कैपिलरीज टिश्यू की तरफ जाती हैं, टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल का प्रेशर कम होता है इसलिए, और कैपिलरीज में ज़्यादा होगा तो कैपिलरी से टिश्यू में चला जाता है और टिश्यू से ये इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसकी प्रेशर ज़्यादा होता है टिश्यू में और ब्लड वेसल्स में कम होता है, तो ये ब्लड वेसल्स में वापस आ जाता है और फिर ये हमारे एल्वेलाई में वापस जाके और ब्रीथ आउट हो जाता है, ठीक है, तो यही हमारा गैस एक्सचेंजेस है। Happens. In the lungs, the gases move across a very thin respiratory membrane, which consists of alveolar squamous cells, endothelial cells of blood capillaries, and their fused basement membranes. The exchange of gases occurs due to simple diffusion as they flow down their concentration gradient or partial pressure gradient. Atmospheric air is a mixture of gases, each of which independently contributes to its total pressure. The pressure of each individual gas is known as partial pressure. The atmospheric pressure is the sum of all partial pressures of gases that make up its content. The direction of gas movement from one area to another is determined by the difference in its partial pressure. A gas always moves from higher to lower partial pressure. Atmospheric air is brought into the lungs through inhalation, but the lungs are not completely emptied and replaced with outside air with each cycle of breathing. In fact, only a relatively small portion of air in the alveoli is refreshed with each breath. This makes the air composition in the alveoli significantly different from that of inhaled air. The gas exchange in the lungs occurs between this alveolar air and the blood in capillaries. Because the volume of blood in pulmonary capillaries at any moment is much smaller than the total volume of air in the alveoli, the gas exchange process essentially brings partial pressures of oxygen and carbon dioxide in the blood to the same levels as those in alveolar air.
It is therefore important that the composition of alveolar air is closely monitored and adjusted to maintain the same values. The body does just that. If carbon dioxide levels increase or oxygen levels drop, the airways automatically dilate to bring them back to normal, and vice versa. Since gas exchange occurs between the air and the liquid of the blood, the movement of individual gases also depends on their solubility in water. This explains why nitrogen, despite being plentiful in atmospheric and alveolar air, does not diffuse much into the blood. Factors that affect gas exchange include the magnitude of partial pressure gradient. The greater the pressure difference, the more rapid the gas movement. At high altitudes, where partial pressures of all atmospheric gases are lower, the gradient for oxygen is smaller and it needs more time to diffuse into the blood. The thickness of the respiratory membrane. The thinner the membrane, the faster the gas diffuses. Diseases that cause pulmonary edema, such as pneumonia or left-sided heart failure, increase the thickness of respiratory membrane and hinder gas exchange. The amount of gas exchange is directly proportional to the contact surface between the blood and the alveolar air. Diseases that affect alveolar surface, such as emphysema, reduce gas exchange efficiency and produce low blood oxygen levels.